Hi everyone, so today we are going to start with our chapter development. I know we are coming after so long, but we have been uploading short videos and you are completing your chapters there. So today we are going to start your chapter number 1 of economics, that is development. So this is a very easy chapter and it is really basic concept I think that you really know from before, right? So you know the topics which I've been covering in this chapter. So without wasting time, let's get started. So the ideas of development and progress has always been with us. We have aspirations, desires about what we will like to do and how we would like to live. Similarly, the idea about a country should be like essential things we require. Can the life be better for all? How should people live? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and the ways in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task, and this chapter we shall make a beginning of understanding development. You will learn more about these issues in a greater depth in higher classes, and you will find out many of the questions not just in economics but also in the course of history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for changes without being aware of this. In the same way, that it is only through a democratic politics process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. सो व्हाट आर दे सेइंग, ये कह रहे हैं कि हमारे जब आज़ादी हुई थी तब से हमारे पास ये आइडिया है. किसका आइडिया? डेवलपमेंट का आइडिया है. और वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस इज़ हमारे सबके अलग अलग चीज़ें, हमारे अलग अलग डिज़ायर हैं, हम ऐसे जीना चाहते हैं. We want these things and more equality, we want more liberalism, we want to be free, like, okay. So this is all possible in democratic political process. So this is it, and you are going to study it, and we are making a basic understanding in class 10 about development. So here you can see without me they cannot even develop, and in this system I cannot develop. So here there are big people like rich people, and this person is saying that they cannot develop without me because that is a mean of transportation. But in this today's time he is not developed. Clear? Moving further, what development promises? Different people, different goals. Now they're asking कि डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करती है. अगर अलग अलग तरह के लोग हैं तो अलग अलग तरह के उनके गोल भी होंगे. लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन to different persons listed in what are their aspirations and these columns. So now they are trying to find कि सबकी एस्पिरेशन सेम रहती हैं या अलग अलग होती हैं. तो इन्होंने नीचे टेबल दिया हुआ है. So first let's refer to this cartoon. You want a car, the way on the country setup all you can hope in. So this is a man, this is the son. Son is asking for a car. He say that in this world you can hope that one day you will get a rickshaw to pull. He is saying that तुम्हें यहाँ पे कार तो क्या मिलेगी, इतनी डेवलपमेंट गंदी हो रही है यहाँ पे, तुम्हें एक रिक्शा तो मिल जाएगा पुल करने के लिए. क्लियर? So now they're landless liberals. What they want more day of works, better wages, local school, quality education, no discrimination, and become leader in village. Now prosperous farmer from Punjab. High family income through sport of prices, MSP. He's asking for MSP to be higher. What is MSP? Tell me in the comment section what is MSP, and who will be commenting first will get shout out in next video. So sport price, what is given here? Hardworking and cheap labor and should be able to. So now in these two cases also we can see difference. How? So it is asking for better wages, which is a liberal,
But the person who is the owner, he want the wages to be low so that he can make more profit. So these are two contradictory demands. Farmer who depend only on rain for growing crops, what will he be asking for? He will be asking for irrigation facilities by the government. He should be asking loans for irrigation. He want to set up tube wells. He can be also be asking, like, there is bad harvest due to only rain, so he also wants some support by the government if he had a bad harvest. Clear? So this is going to be a rural woman from a land owning family. What will be she wanting? From land owning, so she will be finding about better income from the land. She will be finding equality because she is a land owning woman and women are discriminated, so she will be surely asking for equality. Urban unemployment youth, this is the easiest one. It wants employment. A boy from a rich urban family, what does it want? He wants freedom, he wants quality, he wants money. Rich urban family, a girl from rich, she want to get freedom as her brother and she want to study abroad. Adivasi from Narmada Valley, what does he want? Narmada project to stop, and he also want recruitment payments. Recruitment payment. You know, and we have in water resources chapter, remember, we have studied that in Adivasi, in Narmada Valley project, like they are opposing it. So first of all, they want the Narmada project to be stopped. Then they want that they should get recruitment pay. What is recruitment pay? Like if they're shifting you from one place, they will giving adequate amount of money to support you for getting a house and to make a livelihood in the other place where they shifted. Now moving further, we are able to let us know to examine. Let's examine the table. So what happens? Can you see most of the people in this table? Most of the people in this table have different aspirations, different development goals. You may write precisely. So if they are having different development goals, what does it mean? It means that different people have different goals. So this is all it is written in this paragraph. Sometimes they be conflicting, like the first case we studied. The laborer wants more wages, but the owner wanted to be less because he needs more profit. Or a girl expects freedom and opportunity as her brother, and he also shares the household work. Her brother may not like this, and similarly more electricity. So here we have second case of the urban rich family of boy and girl. So the boy will not be liking that her sister will getting as much freedom as he is getting. And also about electricity, industrial want more production, they want more dams for electricity, but the people who are displaced doesn't want that. This is also contradictory. So this is the main paragraph. This is the main thing you have to be studied. Different persons can have different development goals, and two maybe have development, one maybe not development for other, the other may even be destructive for other.
सो व्हाट दे सेइंग इज, ये कह रहे हैं कि अगर अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होंगे. ये डेवलपमेंट गोल्स एक के लिए डेवलपमेंट हो सकती है पर दूसरे के लिए ये डिस्ट्रक्शन भी बन सकती है. इसकी आप एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे. इट्स द मेन एग्जांपल डांस. क्लियर? So now this cartoon, this is an old woman and poor woman. This is a rich person. Those people do not want to develop, but they don't know that they also want to develop, but you need to get a chance to develop. Clear? So we are not reading this, okay? I'm just explaining you because this is like NCERT, you know, NCERT doesn't give you everything like in a spoon feed. It gives you like asking questions and everything, right? So what is they are saying? In this paragraph they say that different people have different goals. Some want regular work, some want wages, some decent prices for their crops, they want more income. But if you are seeking income, that is not only seeking, you are seeking equal treatment, freedom, security, respect for others, recent discrimination. All these important goals, in fact, in some cases, they be more important than income. More consumption because material goods are not what you need. So they are telling you like, okay, you ask for income, they are asking for better wages, they are asking more salary, they have more profit, blah blah blah. सो वट दे आर सेइंग इज कि इनकम ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लोग चाहते हैं. इनकम से ज़्यादा आपको कुछ ऐसी नॉन मटेरियल थिंग्स होती हैं जो पीपल को चाहिए रहने के लिए. आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल. टेक केस ऑफ साउथ अफ्रीका. सो पीपल देयर वर नॉट हैप्पी. दे हैड इनकम्स, राइट? Okay, taking the example of yourself. You are living, you're a classroom. In your classroom, you are having all the material you need, you have all books, but no one is talking to you. Will you be feeling great there? You will be feeling discriminated. So this is not all you need. Money here, why do we need money? We need money so that we can go. So we can enjoy the material goods, but you need some non-material goods too, which are more important. Clear? Moving further, money and material things are that you can buy with is one factor which our life depends on. The quality of our life depends on non-material things. So what they are saying is material things हमें चाहिए, but जो non-material things हैं उन पे भी हमारी life equally depend करती है. If it is not obvious to you, just think this is the example I've just told you about your classroom. So is it clear? Thank you so much. They are often ignored. जो हमें material things तो मिल जाती है पर हमें non material things नहीं मिलती. So it's not focusing here. So this picture is of demonstration of meeting raising height for Sardar or Narmada River. I told you, okay, Narmada. Please wait a second. So you have Narmada project. They are opposing the procession because this is not they. I know they are having money, but they can't leave their material goods too. It is so disheartening for them to leave. So this is a demonstration. So this is the case I told you earlier in the table, right? Clear? Moving further. However, it will be wrong to conclude that we cannot measure. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is no important. हम नॉन मटेरियल गुड्स को मेजर नहीं कर सकते पर वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. Consider another example. Let me explain you this example. So you are getting a job at a far place, but the salary is high. So some people will be attracting by salary. For example, it is giving you 1 crore per month. But you will see different things also. What are the different things? You will see facilities for your family, working atmosphere, opportunity to learn. You will also get a sense of security you need there. You need job security. You need to have dignity there.
ओके, सो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास जॉब भी मिल रही है, आपको चाहे कितनी भी ज़्यादा इनकम हो, आप तब भी कुछ फैसिलिटीज़ देखते हो जिससे आप वो जो अवेल कर पाओ उस जॉब को। तो ये बात हमें दिमाग में रखनी है कि सिर्फ हमें मनी कुछ नहीं कर सकती। अगर आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 मिनट, यू जॉइंट ऑन 1 अगस्त, बट what is job security? You have no security that you will be working there for 1 month, 2 months, 1 year, 4 years, 5 years, and so on. So your boss removes you from 15 August. So what you will do? What you will do of those 1 crore? You have not even earned them. So you need to have job security, guys, and you need to know different things. Okay. So this is the main bell. So I'm erasing it from here. Okay. So hence the development goals that people have not are only about. So this is, the NCERT took 2 pages to just explain you this, that development goals are that people have are not only about work and income but also about important things in life which are नॉन मटीरियल थिंग। ये कहते हैं सिर्फ इनकम नहीं चाहिए लोगों को कोई और इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी चाहिए रहेंगी। So these are the questions, you may do them. So national development, as we have seen, individuals seek different goals. In their notion, national development is also likely to be different. Discuss among yourself India development. कहते हैं इंडिविजुअल के लिए तो डिफरेंट गोल्स हैं अपने आप के लिए, पर क्या नेशनल डेवलपमेंट भी सबके लिए डिफरेंट है? लेट्स डिस्कस। आपकी क्लास में कहा गया कि आप करो, तो देखना सभी के डिफरेंट गोल्स होंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट different persons could have different as well as conflicting notion for countries development. Clear? कि अलग अलग लोगों को भी, अलग अलग पर्सनस को भी अपने देश के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग और या फिर कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर झगड़े भी पैदा हों, जिनके ऊपर राइट्स भी हो सकते हैं, राइट्स मतलब दंगे भी हो सकते हैं। वो जो हमारे पास ऐसे हमने सोचा था कि जो ये तो हमारा हो जाएगा कि सबके सेम ही होंगे डेवलपमेंट को, पर डैम की बात करो, डैम के साथ हमारी नेशनल डेवलपमेंट तो होगी इंडस्ट्रीज के लिए, पर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो उसको डेवलपमेंट ही नहीं मान रहे। मूविंग फर्दर, you can see that however these ideas considered equally important, or if the conflicts, how does this fight? What do they fear for just part of all? We all think that better way of doing things. What about the benefit by a large number of people? Small national development means thinking about these questions. कहती है अलग अलग क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, पर हम जो क्या है, हम सोच के इन क्वेश्चंस का जवाब देकर हम एक रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं। तो ये केस है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे फैक्ट्री शुरू हो गई और यहाँ पे जो एरिया था इसके साथ एक रिवर जाता था, उस रिवर में ये डंप करने लग गए और इसमें से काफ़ी सारी जो गैसेस थी वो निकलने लगी, जिसके प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे नॉशिया, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया होने लगा। तो इसमें जो 20 पीपल हैं और 26,000 ट्रीटेड विद सिम्टम ऑफ पॉइजनिंग, ये सिर्फ एक मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से हुआ जो पेट्रोलियम और मेटल्स में वर्क करती थी, जिसने एक लोकल कंपनी के साथ आइवरी कोस्ट पर डिस्पोज करने की बात करी गई थी। तो ये देखो, ये हो तो डेवलपमेंट रही है, पर ये जो लोग उससे डिसीजेस हो रही हैं उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है, राइट? सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। एक्टिविटी 1, if even the idea of what constitutes development can be varied and conflicting, then certainly there can be difference about the ways of developing. If you know of any such controversy, then try to find out. This is, you have to do by yourself. You have to find an argument about people talking about conflicting and varied development goals for national development. So this is the main question. This can be asked in your examination too. How to compare different countries or states. You might, if development can mean different things, how come to some country or Germany called developed? So there are countries, right? So countries can be of two types.
developed and developing. So how we know that a country is developed or developing? So to find out we need to have some criteria. So अगर हम आपकी क्लास की बात करें, आपकी क्लास में लोगों को कैसे कंपेयर कर सकते हो? बच्चों को कैसे कंपेयर करोगे? उनकी हाइट के ऊपर कर सकते हैं, आपकी हेल्थ के ऊपर कर सकते हैं, आपके टैलेंट के ऊपर कर सकते हैं और इंटरेस्ट के ऊपर कर सकते हैं. जो हेल्दी है स्टूडेंट वो स्टूडियस नहीं हो सकता, मतलब जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है वो शायद सबसे ज़्यादा ना पढ़ता हो. जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडलीस्ट ना हो सकता है. यहाँ पे हमारे पास ये हमें वेरिएशन की बात बता रहे हैं, वेरिएशन. तो हमें डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ता है एक स्पोर्ट्स टीम बनाने के लिए, एक डिबेट टीम बनाने के लिए, म्यूज़िक टीम बनाने के लिए, पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट टीम होती है. तो हम इसको क्राइटेरिया यूज़ करते हैं इनको चूज़ करने के लिए. सिमिलरली usually we take one or more important characteristics of a person to compare these characteristics. कहते कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करने के लिए हम एक बच्चे की एक से ज़्यादा ले सकते हैं. लाइक हमने कंपैरिजन के लिए फ्रेंडलीनेस ली, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन ली, क्रिएटिविटी ली, मार्क्स लिए. तो इस पर आप डिवाइड कर देते हो, बच्चों को कंपेयर कर लेते हो. आपने देखा होगा आपके 9th के रिज़ल्ट आए थे, कोई फर्स्ट आया कोई सेकंड आया, वो हमने कंपेयर किसके ऊपर किया? वो हमने किया मार्क्स के ऊपर. सो इट इज़ ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. अगर हमें किसी भी कंट्रीज़ को कंपेयर करना है तो हमें उनकी इनकम एक मेन क्राइटेरिया की तरह लेनी पड़ती है. क्लियर? हमारे स्कूल में भी ऐसे होता है, चाहे पहले कुछ भी मर्जी हो पर एंड पे जाके जितने मार्क्स आए उसकी वजह से हम कंपेयर कर लेते. वैसी इनकम है मार्क्स के जैसे. सो दिस पैराग्राफ इज, दिस होल पेज इज रियली इंपॉर्टेंट. You can get MCQs, fill in the blanks, 1 marks, 2 marks, 3 marks, 4 marks and 5, 6 marks questions too. So you need to prepare. More developed than other with less income. This is based on understanding of more income means more of all the things like human being needs. Whatever people I can should have, they're able to get a greater income. So the greater income is self-competent and important. So they're important. Who have greater income, they are developed. They have low income, they are developing. So this is how you compare. अगर आपको कंपेयर करना है आपको इनकम लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम क्यों है हमारे पास? क्योंकि हमें जो हमारी ह्यूमन बीइंग नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है. Why is the income? What is the income of country? Eventually the income of country is the income of the residents of the country which give us the total income of the country. जितनी आपकी मतलब जो लोग रह रहे हैं उस कंट्री में उसके रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, उनकी जब हम इनकम को ऐड करते हैं तो हमारी टोटल इनकम ऑफ कंट्री बनती है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. This is important. Let me highlight. So here I have highlighted some point. If you are not interested in whole reading NCERT, you can just read this point. However, the comparison between the country total income is not a useful measure. This is also important question, guys. This is asked in exams. Why the criteria is not good, useful? Since the countries have different population, comparing total income will not a person likely to earn. Are people in different countries better off than other in different countries? We compare average income. We don't compare total income because there is different population. We compare average income, which is the total of income of the country divided by its population. Average income is also known as per capita income. अब जो हमारे पास एवरेज इनकम है वो है क्या? एवरेज इनकम वो है कि जो हमारे पास टोटल इनकम है कंट्री की उसको हमने डिवाइड किया है हमारी पॉपुलेशन के ऊपर और इसको हम पर कैपिटा इनकम भी कह देते हैं. I hope it's clear. Now this is important. This can come in MCQs or 1 mark questions. World Development Reports brought out by World Bank. This criteria is used for classifying countries. अब कंट्रीज को क्लासीफाई कौन करता है? वर्ल्ड बैंक. उसकी क्या आती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. Countries with per capita income of USD 12,616 per annum and above in 2011 are rich countries. Rich countries कौन सी है जिनकी US $12,616 है
पर एनम, जिसके एक पर्सन उसकी कंट्री का 12,616 रुपये कमाता है, रुपए नहीं US डॉलर कमाता है हर साल। द US डॉलर 2035 और लेस आर लो इनकम कंट्री, जिनका 1035 से कम है वो लो इनकम कंट्रीज़ हैं। इंडिया कैटेगरी में आता है लो मिडिल इनकम की। तो हमारी पर एनम की है, पर एनम की पर कैपिटा इनकम वो है 1530 USD। So the rich countries excluding the Middle East and certain small countries are generally called developed countries। किन कोई रिच कंट्रीज़ हैं, उनमें से हमने एक्सक्लूड की है मिडल ईस्ट और कुछ स्मॉल कंट्रीज़, उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। जो रिच कंट्रीज़ हैं उनमें से कुछ एक्सक्लूड कर दी, हम उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कह देते हैं। सो दिस टेबल एवरेज इनकम, while averages are useful for comparison they also hide disparities। कहते चाहिए कितनी बच्चों पर इनमें जो लोग हाइड भी कर देते हैं, कुछ हाइड करती हैं कुछ चीज़ें ये इनटू। यहाँ पे एक टेबल दिया है, इन्होंने कंट्री ए लिखी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी की मोस्टली इक्वल इनकम है। देयर वेरी लिटल डिफरेंस ऑफ 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, दैन 700, 200, then 500, then 300. So there is very less. So average income will be, you need to add these first and divide by 5. Then you need to add this and divide by 5. So total income तो सबकी 50,000 निकलेगी दोनों कंट्री की। बट यहाँ पे तो सब लोग इक्वली कमा रहे हैं, पर इस कंट्री में जो 500, 500, 500, 500 और एक आदमी इनके टोटल से भी ज़्यादा कमा रहा है। तो ये है डिस्पैरिटी जो हिडन है, कि हमें क्या पता कि कौन सा बंदा कितना कमा रहा है। दे हाइड व्हाट आर इक्वली डेवलप्ड परहैप्स कंट्री बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कंट्री ए में रहना चाहोगे या कंट्री बी में, लोग कहेंगे मैं कंट्री ए में रहना चाहूँ, क्योंकि सभी का लक तो है नहीं कि सभी को 48,000 मिले। तो लोग क्या करेंगे कि ये सीख करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इनकम है। Short of being fifth citizen, but if it is lottery decides citizenship number, perhaps you will. Country A, even though the countries have identical average income, the country A is preferred because it has more equitable distribution. Country A हम प्रेफर क्यों करें? क्योंकि इसमें इक्वल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ना तो कोई बहुत ज़्यादा रिच है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा पुअर है। कंट्री बी में कहीं तो कोई भी बहुत पुअर है या फिर एक्सट्रीमली रिच है। देयर फॉर जो एवरेज इनकम है वो हाइड कर देती है कि एक पर्सन की इनकम क्या है। क्लियर? सो दिस इज हाउ दिस कार्टून इज एक्सप्लेन। कंट्री विद नो रिच एंड पुअर, वी मेड दिस चेयर एंड वी यूज़ देम। उन्होंने 4 चेयर बनाई और 5 जाने यूज़ कर लें, उन्होंने खुद बनाई खुद यूज़ करें। पर जहाँ पे रिच एंड पुअर हैं, वी मेड दिस चेयर एंड ही टुक देम। यहाँ पे इन्होंने 6 चेयर बनाई, पर सिर्फ 2 पे तो 4 जाने बैठे हैं और 4 पे सिर्फ 1 जाना बैठा है। तो यहाँ पे रिच और पुअर का कंसेप्ट आ गया। यहाँ पे ये 48,000 वाला बंदा और ये 500 वाले बंदे, और ये सारे 10,000 वाले बंदे हैं। क्लियर? Income and other criteria. And when we looked at individuals' aspiration and goals, we found that people not only think about better income, but they have goals such as security, respect for others. Similarly, when we think about nation or a region, beside the average income, there is equally important attribution. जैसे कि हमें एक अलग अलग चीज़ें चाहिए, वैसे कंट्री को भी हम इनकम नहीं चाहिए, उनको और भी कुछ चीज़ें चाहिए। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम दी हुई है। महाराष्ट्र की 1,07,000 है, केरला की 88,500 है, बिहार की 28,700 है। तो यहाँ पे ये पर कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट प्रेजेंट प्राइसेस ऑफ 2011-13 बताए गए हैं। लेट अस इग्नोर व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मीन्स, रफली वी कैन टेक इट टू बी पर कैपिटा ऑफ स्टेट। पर कैपिटा इनकम है स्टेट की और कुछ भी नहीं है ये। वी फाइंड आउट दैट 3 महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, बिहार इज एट द बॉटम।
This means that as on an average a person in Maharashtra earn 1,07,000 rupees, but in Bihar they only 28,700. If per capita income were to be used as a measure of development, Maharashtra would be considered more developed than Bihar and least developed of state of three. Now let us talk a certain performing of the states. कहते हैं अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखनी होती तो महाराष्ट्र को कह देते कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, पर कुछ और चीज़ें भी, ये टेबल को रेफ़र करें अगर हम, अब एक बात दिमाग में रखो, पहले जो हमें दिया गया था उसमें मेरे हिसाब से हरियाणा है महाराष्ट्र की जगह, तो आप चेक कर लीजिए आपको कौन सी बुक है। ये न्यू एडिशन है, मुझे पता है क्योंकि मैंने ये न्यू एडिशन फाइल डाउनलोड की है, तो ये न्यू एडिशन है और आपके पुराने एडिशन में मुझे लगता है हरियाणा दिया हुआ है। तो इन्फैन पहले ये टर्म्स जानते हैं, ये है क्या, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 बर्थ। जो बच्चे 1 साल से कम हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इस नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अंडर लिव्स बॉर्न। अगर मेरे पास यहाँ पे 10 बच्चे हैं जो 1 ईयर की एज से कम है, पर उनमें से 2 की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो ये हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 2/, जितना किसी का कम होगा उतनी हम इसको डेवलप्ड मानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 25 है, 12 है, 43 है, तो केरला में सबसे कम है, इसमें ज़्यादा है। तो इस अगर मैं सिर्फ इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करूँ तो केरला मोर डेवलप हो गया। अगर लिटरेसी रेट क्या है, अब मेजर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7th एंड अबव एज ग्रुप, जो 7 से ज़्यादा ईयर के पीपल हैं क्या उनको पढ़ना लिखना आता है, वो देखते हैं। महाराष्ट्र में 100 में से 82 को आता है, 94 को आता है, तो इसमें भी मैं देखूँ तो केरला मोर डेवलप्ड है। अगर मैं बात करूँ नेट अटेंडेंस रेशियो की, ये क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग द पर्सन, जो कितने 14-15 ईयर के बच्चे हैं जो आपका स्कूल अटेंड कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 64, 78, 35। तो इससे तो मुझे क्या पता लग रहा है कि जो केरला है उसका तो ये सबसे अच्छा है, पर यहाँ पे मुझे क्या था, महाराष्ट्र अच्छा है। तो ऐसे तो नहीं है महाराष्ट्र को कह सकते यार ये मोर डेवलप्ड है, केरला तो बहुत अच्छा कर रहा है उससे, जहाँ इनकम कम है। अगर हम बात करें out of 100 children 12 died before completing 1 year, but in Maharashtra the proportion of 1 year was 25, which is more than double. On other hand, per capita of Maharashtra is more than Kerala in 7.1. Think of how dear you are to your parents, how everyone is happy when a child is born. Now let's try to think of the parents whose child died before its first birthday. How parents must treat the parents. Note that the year of the data process is 2012. We are now talking of old times. It is more than 65 years after independence, and our metro towns are full of high-rise buildings and shopping malls. कहता केरला है, उसमें जो हमारे दूसरे फैसिलिटीज़ हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, पर उसकी पर कैपिटा इनकम कम है। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र को मोर डेवलप क्यों मानो, क्योंकि आप बड़े व्हेन यू वर बॉर्न लाइक एवरीवन वाज हैप्पी राइट, तो कैसा फील होगा जिनके बच्चे मर रहे हैं। The problem does not end when infant mortality rate. The last column of shows 2 of the children aged 14-15 in Bihar are not attending school beyond. This means अगर आप बिहार में स्कूल जाओगे तो यहाँ पे 2/3 ऑफ योर क्लास है वो मिस कर रही होगी। Those could have been in the school are not there and this happened to you. Would you be able to read what you are reading now? पर अगर हम बात करें कि बिहार है, उसमें नेट अटेंडेंस रेशो बहुत ही कम है, तो आपको अपने जो 2/3 फ्रेंड हैं वो तो कभी मिलेंगी नहीं क्लास में, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, बच्चों के पास स्कूल आने का खर्च। मिड डे मील स्कीम से नेट अटेंडेंस रेशो बढ़ी है, ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ यू विल इंक्रीज इट। सो मिड डे मील आप स्कीम दिमाग में रखें। तो जो चाइल्ड लेबर है उसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और पब्लिक, अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड एंड सर्विसेज।
कहती जो आपके पास मनी है उससे आप सब कुछ तो बाय कर नहीं सकते, आप कुछ गुड्स बाय कर लोगे, सर्विसेज बाय कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता पैसे से, आपको अनअडल्टरेटेड मेडिसिन नहीं मिल सकती, unless you can afford to shift to a community which already had these things. Money also not be able to protect you from infections, so the whole of our community takes preventive steps. यहाँ पे एक ऐसे कह रहे हैं कि जो आपके पास पैसा है वो पैसा सिर्फ कुछ गुड एंड सर्विसेज बाय कर सकता है। अगर आप सोचें कि आप इससे सब कुछ बाय कर लेंगे, सो दिस इज़ नॉट ट्रू। आप उससे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं परचेज कर रहे। अब कोरोना आया तो जिसके पास पैसा था, क्या उसको कोरोना इन्फेक्शन डिसीज़ नहीं हुई, उनकी क्या मौत नहीं हुई? तो पैसे से आप अच्छा डॉक्टर तो ढूंढ लोगे पर आप अच्छी हेल्थ नहीं ले सकते। क्लियर? Actually, for different important things in the best way, also cheapest way to provide the goods and services collective. Just think of the cheaper to have collective security of whole locality. कहते हैं अगर हमें सिक्योरिटी गार्ड रखना है, हम एक कम्युनिटी का रखेंगे, हम हमारी सोसाइटी का गार्ड रखेंगे। अगर अकेले के लिए रखने लगे वो तो एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगा। Not until your parents for afford you to send to some provided school or elsewhere. आपके पेरेंट्स को भी ऐसे चाहिए कि कोई cheaper schools हों। So actually you're able to study. Many other children also want to study because the many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to teach secondary school level schooling because government societies are not provided. कहते गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की हमें लोड क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें यहाँ पे नीड है कि हमें फैसिलिटीज़ मिले। हमें जो कई बच्चे हैं वो स्कूल जाना चाहते हैं पर वहाँ पे स्कूल नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो गर्ल्स हैं वो तो केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. It is an adequate provision of basic health and educational facilities in some state public distribution system. PDS function well, health and nutrition. State okay. यहाँ पे क्या कहते हैं केरला का लो इन्फिनिटी रेट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उसने हेल्थ फैसिलिटीज़ दी हैं। वैसे ही तमिलनाडु की स्टेट में हमारे पास PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को न्यूट्रिशन मिल पाता है। क्लियर? सो दिस यू कैन रीड बाय दिस ईयर दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टेबल. Here comes the actual thing. So I'm just focusing on this word. What is this? BMI. It is nothing but body mass index. This tells you how healthy are you. Are you undernourished? Are you obese or you're overweight? Okay. So how to calculate? Height in meters is divided by the weight by the square height. You need to write weight upon your height square. Clear? If it is less than 18.5, then the person is undernourished. If BM is more than 25, the person is overweight. Do you remember this criteria is not applicable to growing children? Clear? Because during the age of adolescence, there are many changes, so this is not for you guys, okay? You're growing children. So each student in weight and height. To know, we are just doing it for the nutritional status. Then you have, this is important now. I know there is many important things, but it has a very little, it has good weightage according to this chapter. Once it realizes that even though the level of income is important, yet an adequate measure of the level of development, we begin to think of other criteria. There should be a long list of such criterions, not be your useful. What is a smaller number of so important things? Health and education indicators such as one's comparison with Kerala and Maharashtra are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely. For example, Human Development Report published by UNDP. Now write the full form of UNDP. United States.
sorry, United Nations Development Program. Clear? Note it down. I need to erase it actually. Clear? So this is United Nations Development Program, which is Human Development Report, is published by UNDP, compares countries based on education level of people and health status and per capita income. It would be interesting to look at relevant India neighbor human development reports. कहते हैं जो हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें सिर्फ पर कैपिटा इनकम भी है, पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ और एजुकेशन को भी साथ लेकर चला. सो दिस दे आर गोइंग टू टेल अस अबाउट दिस टेबल. तो श्रीलंका है, it is per capita. Okay, we are not taking this. We will be taking three important states: Sri Lanka, India and Pakistan. So Sri Lanka has per capita income of gross national income as 9,250 and life expectancy at birth is 74.3. Literacy rate is 91.2. HDI rank in the world is 73, whereas India is 5,150 and life expectancy is 66.4 and 62.8 literacy rate, and HDI rank, which is Human Development Index rank, which is 135. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, श्रीलंका मोर डेवलप्ड है. सो दिस इज 2014 guys, this is not what's happening today. So your second homework is that tell me the India's HDI rank in the world 2021 or 22, whichever data you get. Clear? So this is important. We are coming at second from all the states and Sri Lanka is, so this is also important. You can be asked question about this. What is more important? It is India, Sri Lanka and Pakistan. Clear? So HDI stands for Human Development Index. 177 कंट्रीज़ में से ये कैलकुलेट किया. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कि हमारे जो इंडिया की है एक्सपेक्टेंसी है कि एक आदमी एवरेजली 66.4 ईयर्स जीता है. तो जब एक बच्चे का जन्म होगा तो हम कह देंगे कि इसकी एवरेज जो एज है वो 66.4 होगी, जितनी हमारी कंडीशंस. जो पर कैपिटा इनकम है इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्रीज, सो इट इज़ ईजी वे दैट एवरी डॉलर वुड बाय सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एनी कंट्री. Sri Lanka is a small country, but it is more developed than India according to it has. Nepal has less than the per capita income of India, but not far behind India in expectancy and literacy. तो ये हम जब एग्जामिन करते तो हमें पता लगता है कि श्रीलंका हमसे आगे है. नेपाल की चाहे इनकम कम है पर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हमसे बहुत अच्छी है. तो ये काफ़ी सारे एक्सपेक्ट्स हैं जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ऐड किए गए हैं. क्लियर? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. Suppose at present a particular country is quite developed, what would sudden development go further? This is my favorite quote from this chapter. We have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it from our children. कहते कि हमने इनहेरिट जो किया है वो हमारे फोर फादर से नहीं किया, हमने हमारे जो चिल्ड्रन हैं उनसे बोरो किया हुआ है कि जो हम यूज़ करें. लाइक वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग फॉसिल फ्यूल्स. So our forefathers also used them. We have not taken from them, right? But we are borrowing from our children because it takes a lot of time, and during their time I don't think so there will be anything left now. So however, the sense of the second half of the 20th century, a number of scientists are warning that the present types and level of development is not sustainable. What is sustainability of development? A country should be developing or maintaining its development.
कि कंट्री डेवलप भी करे, पर जो यहाँ पर है उसको खोए ना, उसको भी अपने पास रखे। देन यू हैव ग्राउंड वाटर. So here you have that in 300 districts have water level decline of 4 meter during past 20 years. 1/3 of the country overusing groundwater reserves. 25 years, 60% of the country would be in the same present way if resource continues. So we will be living in dry condition where there will be no water. Groundwater overuse is done in Punjab, Western UP. Hard rock productive central and southern India when the coastal rapidly growing over. So we are using water too much and ground water level is decreasing. So this is also, first you have water till here, then you come the water here, then that's come here. Now your rope is even smaller. Don't. So here one thing comes in my mind, don't make your rope longer, make the water flow. Clear? I think this is last page. Groundwater is example of renewable resource. These sources are replenished by nature in case of crops and plants. However, these resources may be overused, and in the case of groundwater, if we use more, it can but be replenished by rain. We would be overusing our resources. Now they're saying save your resources, guys, that you have time. They have told us about renewable resources. Renewable जो replenish हो जाए, water replenish हो रहा है, पर जो rate है वो बहुत ज़्यादा है हमारे यूसेज का, उसके हिसाब से वो रिप्लेस नहीं हो पा रहा. जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स हैं वो तो एग्जॉस्ट ही हो जाएंगे, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स. ये जो क्रूड ऑयल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप. मिडल ईस्ट कंट्री में सिर्फ 78.1 ईयर्स हमारा रहेगा. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिर्फ 12.1 ईयर का रिजर्व बचा है. वर्ल्ड में सिर्फ 53% ही हमारा जो रिजर्व 53 ईयर्स ही लास्ट करेंगे वो रिजर्व्स. हम तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. यूएसए हैज़ लो रिजर्व्स, तो उसके तो 12 ईयर्स में ही ख़त्म हो जाएगा. ये हमारी रिपोर्ट्स बता रही हैं. जो हमारा क्रूड ऑयल है उसका एक्सेसिव यूज़ हो रहा है. सो हमारे पास स्टॉक्स बहुत कम है और हमें इसको जुडिशली यूज़ करना चाहिए. हमें इसके अल्टरनेटिव्स, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हाइड्रोजन से हम एनर्जी बनाएंगे, क्रूड ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं पड़े. तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन करिए, आपको करना पड़ेगा. पे आपके पास टाइम है, अगर टाइम हाथ से चला के फिर आप पछताएंगे. Consequences of environmental degradation do not respect the national state boundaries. The issue is no longer specific, is linked sustainable development, comparative new area knowledge of scientists, economists, philosophers. Social scientists are working together in journal the question development of progress at times the member society. As individuals, we need to ask where we want to go and where we wish to have. तो ये कुछ भी नहीं है इसमें. ये कह रहे हैं हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उसकी. जो ये बाउंड्रीज तक नहीं रह गया, ये जो हमारा जो हम ये इशू की बात करें ये एक रीजन का नहीं रह गया है. हमें इस पर तुरंत एक्शंस लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये हमारा सेफ हो सके. हमें अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, हमें एक्सेसिव यूज़ रोकना पड़ेगा, हमने सारी चीज़ें जुडिशली यूज़ करनी पड़ेंगी. तो इसीलिए हम कहते हैं कि टाइम के चलते चलते संभल जाइए वरना आप पछताएंगे. तो ये था आपका चैप्टर, इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है. आपने NCERT आज रीडिंग मेरे साथ कर तो ली, पर मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक है वो कर लीजिएगा, उसकी एक बार रीडिंग कर लीजिए, या फिर आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर आप एक NCERT को ही डबल रीडिंग दीजिएगा. इसके साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. इसके साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट. आप ये क्वेश्चंस कर लेना एक्सरसाइज के
और जो मैंने 2 होमवर्क दिया है उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। जो कमेंट में जिसका आंसर आएगा उसको शाउट मार्क मिलेगा नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूँगा। सो आपके इसके साथ आपका होता है चैप्टर कंप्लीट। आपको भी ऐसे ही करना है, आपके एनसीईआरटी खोलो और उसके ऊपर लिख दो चैप्टर कंप्लीट। नाउ इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक करके जाना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।